Hi guys, welcome to Smart Work Labs. So tomorrow is the day that you guys have been preparing for over a year now. These are just some last minute do's and don'ts so that you make the best out of the next 9 days. So let's start from today itself. Today is the 14th. Exam starts tomorrow. The first thing that you have to understand today that you have to get a very good night sleep, right? Rest well tonight. Don't study till the last minute कि मैं 2 बजे तक पढ़ लेता हूँ 3 बजे तक पढ़ लेता हूँ. Tomorrow anyway it's an essay, so whatever you read today is not going to make any difference. आपने बहुत कुछ तैयारी कर ली है, right? So sleep on time. Take at least a 7-8 hours sleep. Get up in the morning, have a very light breakfast, and reach the center by 8 a.m. Tomorrow. 9 a.m. the exam will start. The first thing that you should do after reaching the center is check your roll number in the list if you're at the right center or not. Once you check the roll number, you are at the right center, then you can relax. Again, ideally, it is not really necessary that you study in the morning. After reaching the center, you can just relax, chit-chat with your friends or family, whoever is accompanying you, and then get into the exam center. While getting into the exam center, it is important that you do not carry anything that is not allowed in the exam. You should have a watch. Generally, most of the center allow watches. Some centers may or may not. But to be on a safer side, do not wear any kind of smartwatch or a digital watch. A good thing would be to carry a analog watch with you, right? In case you are in a habit that you want to carry the big table clock with you, make sure it is an analog one and not a digital one. It should not happen that they do not allow you with that, and that jitters you a bit in the beginning itself. Another important thing is do not get into an argument with anybody, including the invigilator there. It is only a waste of time and it will spoil your mindset while writing the paper. So whatever is happening, let it happen. Most of the time, everything goes according to the plan. It will be very unlikely that somebody is going to disturb you or do anything which is unlikely to be expected in the exam. ये हो सकता है that you might get the paper a little late, maybe 1 or 2 minutes late, but again, don't fight in the end कि मुझे 2 मिनट पेपर लेट मिला था, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए and all that. एक बार रिक्वेस्ट करिए, otherwise the extra 2 minutes that you are seeking, you will end up wasting in fighting itself. उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है? And that will spoil your mood for the next paper also. Now, once you get the paper in most of the centers, you will get the paper at least 4-5 minutes in advance, generally, sometimes 2 minutes in advance. So make the best use of that time. Quickly go through the questions once. एक बार skim read जरूर करिए. Try to mark what all questions you know very well and try to mark what all questions you have no clue about. ठीक है? Some of you also like to start brainstorming already. That is also fine. But important is that you should know that you are not starting with a question that you are not aware of. तो वो 3 मिनट 2 मिनट जो भी मिलेंगे, that can be very well utilized to figure out where you want to start with. ठीक है? Now, there is a lot of things that goes on कि भाई पहले 1 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, पहले 1 घंटे में इतने हो जाने चाहिए, otherwise press the panic button. Don't do that. आराम से कोशिश करिए. If the best thing to start your answers with would be कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आते हैं पहले. Right? Figure out those 4, 5, 6 questions that you know very well, because in the beginning there is inertia. Your brain will anyway start slow. So any question that you're trying to write will take a little extra time anyway. So let's say, for example, a 10 marker which is expected to be done in 7 minutes, you might end up taking 10-12 minutes already in the first instance. 10 मिनट तो लग ही जाएंगे हो सकता है क्योंकि आप शुरू कर रहे हो. At the same time, अगर उसमें आप वो क्वेश्चन पिक करते हो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, this time can stretch up to 15 minutes also. So वो पैनिक आप पहले ही प्रेस कर लोगे बटन, that will be a problem. If instead you pick up all the questions that you know, your hand will not stop at least, and you will be able to finish the 7-minute answer in 9 or 10 minutes. So that is also fine. So कोई ऐसा रूल exactly मत बनाइए. जनरली जिसका जो चल रहा है वो चलने दीजिए वैसे तो, बट इफ यू आर हेलबेंट कि नहीं मुझे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है, 15 मार्क का पहले करने हैं, एटलीस्ट डोंट डू अ क्वेश्चन दैट यू डोंट नो इन द फर्स्ट इंस्टेंस. जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, there will be 1 or 2 questions at least in almost every paper. Keep it for the absolute end. वहाँ पे आप quickly you can just spend time and write at least a body part if you're not able to come up with a good intro or conclusion. ठीक है? तो spend 5 minutes, not more than 5 minutes on such questions. बीच में आप करेंगे तो you'll end up wasting time. Now, if you want to check your performance, what you can do is after 1.5 hours, that is halfway through the paper, just quickly look at how much you've done. If you have done 9 to 10 answers, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या चूज किया है, 10 मार्क या 15 मार्क, देन यू आर सॉर्टेड.
इफ यू फील कि नहीं यार अभी 1.5 hour हो गया और मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चंस किए हैं, द बेस्ट वे वुड बी, इंस्टेड ऑफ स्क्रैम्बलिंग एट द एंड, द बेस्ट वे वुड बी स्टार्ट राइटिंग वन लेस पॉइंट इन एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू स्टार्ट. जो भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लिखने वाले हैं आगे, एक पॉइंट कम लिखना स्टार्ट करिए सो दैट एंड में स्क्रैम्बल ना हो जाए. एक पॉइंट कम लिखने का मतलब है 10 पॉइंट्स लेस, दैट इज इक्वल टू 1 फुल आंसर दैट यू विल गेट एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर. ठीक है, तो वो स्क्रैम्बल नहीं होगा आपका. राइट. नाउ व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर, important thing is to focus on introduction and conclusion. Try to write contextual introduction, contextual conclusion. If there's, let's say, a question on how millets can save the food security crisis or the climate change crisis in the country, try to highlight the food security crisis in the introduction rather than saying that UN has designated 2023 as the International Year of Millets. ऐसे मत start करिए. So contextual introduction would always help. Right? It will take you farther than writing a generic introduction. Don't write an introduction just for the sake of writing a report name. ठीक है, वो सब आप body में use कर पाएंगे, and you can always use those things in the conclusion. Also make sure conclusion भी in line with the demand of the question हो, because अक्सर ऐसा होता है कि while writing the answer, while we reach the end, conclusion लगाते आते हम भूल जाते हैं question का context क्या था, and we just write a generic conclusion. So the important thing to understand here is कि आप conclusion लिखने से पहले क्विकली एक बार क्वेश्चन को स्क्रीम थ्रू कर लीजिए कि एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, सो दैट यू आर एबल टू राइट द कंक्लूजन आल्सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट. एक रीडिंग में क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो डू स्पेंड अनदर फ्यू सेकेंड्स टू रीड इट अगेन रादर देन जस्ट स्टार्टिंग फॉर नो रीजन. ऐसा नहीं होना चाहिए पंचायती राज पे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपने पंचायती राज पे लिखना स्टार्ट कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दैट विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स. वो 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के अगर आप दोबारा रीड करेंगे, दैट वुड ऑलवेज हेल्प यू. वो जो 2 एक्स्ट्रा नंबर हम ढूंढ रहे हैं, 3.5 की बजाय हो सकता है 5.5 नंबर मिल जाए. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. राइट. नाउ बिटवीन द 2 पेपर्स, फिनिश द पेपर आराम से. बिटवीन द 2 पेपर्स टेक रेस्ट, अगेन लाइट लंच, डोंट ईट हैवी, और बिल्कुल भी ना खाएं ऐसा भी मत करिए. डू ईट समथिंग. रेस्ट आफ्टर दैट. अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास जगह है बैठने की, बिकॉज इट विल बी वार्म आउटसाइड, आराम से रेस्ट करिए सो दैट यू आर फ्रेश अगेन इन द सेकेंड पेपर. ठीक है. सम पीपल टेंड टू ड्रिंक कॉफी राइट बिफोर द सेकेंड पेपर. सम पीपल टेंड टू इवन ड्रिंक रेड बुल्स राइट बिफोर द पेपर कि थोड़ा सा एनर्जी पंच मिल जाए एक. सो यू कैन ट्राई दैट इफ यू आर यूज्ड टू ऑफ दैट. इफ यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट, डोंट स्टार्ट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. सिंपल. कैरी वाटर विद यू. मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर इज अवेलेबल. यूपीएससी वगैरह में तो ढोलपुर हाउस में तो पानी वानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से होती है, बट इन अदर सेंटर्स दे मे नॉट बी वाटर. तो कैरी वाटर विद यू प्रॉपर्ली. राइट. And once you are done with both papers, the most important thing to understand is do not talk to anybody about the paper. Over the next 9 days, these 9 days are just your 9 days. Be in that zen mode. किसी से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अरे यार तूने इस आंसर में क्या लिखा, उस आंसर में क्या लिखा, क्या पेपर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, पेपर लेंथी था क्या. Because anything that you discuss, you might not realize it might hamper your mindset for the next paper. तो पेपर के बारे में बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है. चिल करिए. जो कर दिया, बात करके कुछ बदलेगा नहीं. पुराने पेपर में नेक्स्ट पेपर में बदल सकता है. इट माइट नॉट वर्क आउट वेरी वेल. सो डू नॉट टॉक अबाउट द पेपर विद एनीबडी इंक्लूडिंग योर टीचर्स में भी कि पेपर में क्या लिखा. स्ट्रैटेजी डिस्कशन करना है कि सर इसमें ऐसे गड़बड़ हो गई, नेक्स्ट में क्या इंप्रूव करूं, वो फिर भी आप कर सकते हैं. बट कंटेंट पे मत जाइए कि सर इसमें ये पॉइंट लिखा सही लिखा क्या, वो पॉइंट लिखा सही लिखा क्या. अ लॉट ऑफ यू हैव दैट टेंडेंसी. दैट नेवर हेल्प्स एनीवन. नेक्स्ट 9 days बी इन दैट zen मोड. किसी से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है. सो दैट्स अबाउट इट. व्हाटएवर हैपेंस, डू वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड आई होप you achieve the dream that you started for. Thank you very much. Best of luck once again.